हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने प्रीवियस वीडियोस में स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखा, स्ट्रिंग की स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट को देख लिया, स्ट्रिंग के बहुत सारे फंक्शंस को पढ़ लिया ना। सो नाउ इन दिस वीडियो वी विल बी यूटिलाइजिंग ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स विद द हेल्प ऑफ लूप्स, विद द हेल्प ऑफ ऑल द स्ट्रिंग मेथड्स. So there are some programs that we are going to discuss today. So let me start here. So suppose we are having the first program, that is we are trying to reverse the given string, है ना? So write a program to reverse the given string. So what is this program? Suppose you have given one string, that is input is your Rahul, and what is the expected output by this program to you all? That is your output LUHAR, means just you're trying to reverse the string. यदि आप ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू देखें, हम जो हम ट्रेडिशनली करते आए सी सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग में, एंड हाउ इट इज डिफरेंट इन अ पाइथन, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द सी सी प्लस प्लस, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो लेट मी टेक वन सिनेरियो हियर. जब हम सी सी प्लस प्लस की मेथडोलॉजी को यूज करके हम पाइथन में काम करने की कोशिश करते हैं, सो हियर व्हाट वी विल डू, जस्ट टेक we will take the input from the user here. Suppose enter the input, enter the data to be reversed. Now, once we are having this string, what we need to do, we have to find out the length of the string. So what we will do, हमें कब तक चलना है, किस इटरेशन तक चलना है रिवर्स करने के लिए उसको. सपोज मैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड आउट करता हूँ यहाँ पर s, और मुझे उसकी -1 वैल्यू तक जाना है ना, एज पर द ट्रेडिशनल वे दैट वी हैव डन. तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेते हैं, सपोज वेरिएबल इज टारगेट, और उसको हम स्पेस से स्टार्ट करते हैं, सॉरी ब्लैंक से स्टार्ट करते हैं कंप्लीटली एम्प्टी स्ट्रिंग से, और मैं एक लूप चलाता हूँ वाइल आई इज ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा क्योंकि हम लेंथ -1 ऑलरेडी ले चुके हैं. व्हाट आई नीड टू डू, जस्ट सिंपली द टारगेट प्लस इक्वल टू एस ऑफ आई. हमारी जो स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग को हम रिवर्स ऑर्डर में रन कर रहे हैं और हम अपने टारगेट में उस स्ट्रिंग को कॉन्केटनेट करते जा रहे हैं. ये हमने देखा था कि हम किस तरीके से करते हैं. और व्हाट आई विल डू हियर, आई माइनस इक्वल टू 1. So when you run this code and finally when you print the target and run this code, suppose I am passing here the Rahul. When you run this code, can you see here? That is LU. Just a minute. That should be Rahul only. When I run this code, can you see this Loha here? So it's a completely reverse. But Python give you the another provision, है ना? So you can assume it the first way, the way one to reverse. Now what could be the another situation that we have learned till now? सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है हमारा, हमने सीखा है कि भाई कोई भी स्ट्रिंग हमें दी हुई है और जो हमने इनपुट लिया है यूजर से, यदि मैं स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट को जानता हूँ, है ना, इफ आई नो द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लाइसिंग इन द पाइथन, इट्स वेरी इजी टू मी टू रिवर्स द स्ट्रिंग. व्हाट आई नीड टू डू, सिंपली आई विल टेक द इनपुट हियर and what I will do, just I print the s of colon -1. So what I'm doing, I'm just with the help of slicing, I'm reversing the complete string in a one line of code that has been replaced by Python. Another way, that method we have used and the method available in the Python, that is a reverse of string method. So let me take same example here. Suppose what I'm doing, just I'm simply taking a join method here, and what I'm doing, dot join, in this I'm just reversing the string by using the reverse function. When I run this code, can you see the output? So these are the three ways, and Python give you this line of code. You can see this 1 2 3 4 5 6 7 line of code has been changed to the 2 line of code here with the help of Python. So this is what the power of Python. So in a
less number of lines you will be able to solve the problem. So this is the one question. Suppose we take another type of question here. Suppose you are having this program in which you have written the learning Python is very easy. And what your expected output is easy very is Python learning. So can you see this in the previous case we were just reversing the particular string, but in this what we are trying to reverse the complete sentence. So how we will be dealing with this? So for this, we have to take the individual word of the string first. So how we will take the individual word? Suppose I am taking the input from the user to the data. I need to do. यदि मुझे इसके एक एक डेटा को चाहिए तो we have to call the split function. So we simply call the split function here. When you will check for the L only, you can see the output. This is what the best way to do the code. यदि हम उसका आउटपुट देखते जाते हैं और देखते हैं और वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द आउटपुट दैट व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इन आवर कोड, चीज़ें और क्लियर होती हैं. कैन यू सी दिस? लर्निंग पाइथन इज वेरी इजी. ये हमने पूरा का पूरा डेटा जो है स्प्लिट कर लिया. नाउ व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्वेश्चन? वी वांट दिस लास्ट word to be the first word and the first word to be the last word. तो जो स्ट्रिंग रिवर्सल का प्रोग्राम था वो स्ट्रिंग रिवर्सल का प्रोग्राम नहीं बचा. नाउ दिस द प्रोग्राम ऑफ बेसिकली a list reversal. So what I need to do? Simply suppose I am taking one list here and suppose that is the L1 list. हमने empty list ली. हम क्या करेंगे? हम लेंथ कैलकुलेट करते हैं हमारी लिस्ट की एंड -1 तक जाते हैं क्योंकि हम जीरो इक्वल टू जीरो वाला केस चेक कर रहे हैं हर बार, है ना. तो हमारे प्रोग्राम के लिए सपोज आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. नाउ व्हाट आई विल डू? सिंपली आई विल टेक द न्यू लिस्ट and what the function that we have learned previously for the list append, we will be appending this particular ith index data to the new list. ये कब तक चलेगा? जब तक कि i की वैल्यू हमारी जो है किसके इक्वल है? i से 0 से बड़ा है ना. And I print this L1. When I run this code, can you see this? Now you can see this. The learning Python is very easy. Now the easy very is Python learning. So what was the expected output here? I think we can see that we have reached to that particular level. लेकिन last में हमारे पास क्या है? Now how to use the learn method of the function. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? Simply what I have to do, we will be taking one variable that is the output, and what I will do, just I will separate the string by using the space. I will be calling the join method that we have learned previously and simply pass this. And what I will do? Print output. When I run this code again, can you see the output? So the easy very is Python learning. So students, can you see this? In the previous program, we just tried to reverse string. And for this program, what we tried? We tried to reverse the individual word that is space separated in the string. Now, for another program. Now what we are trying to do? Now we are trying to want to convert the specific word and want to hold. What is it? Suppose I am writing one program. Suppose I am having one test case here. Just a minute. Suppose I am having the test case here. Can you see this? What I'm doing? Rahul Software Solutions. For this, what I'm trying to do? Previously, we have reversed the complete sentence. Now, what we are trying to do? From this sentence, we are extracting the individual word
देन वी आर ट्राइंग टू रिवर्स इट। तो अब मुझे क्या करना है, इंडिविजुअल वर्ड निकालना है। इस इंडिविजुअल वर्ड को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम कॉन्सेप्ट दैट वी हैव यूज्ड। यहाँ तक हम स्प्लिट करके हमारी लिस्ट लेकर आएंगे। सो आई एम यूजिंग दिस कोड हियर। तो स्प्लिट के बाद यदि हम जो डेटा लिखते हैं, दैट डेटा इज अवेलेबल हियर, बट व्हाट वी नीड टू डू, मैं ith इंडेक्स को करूंगा और ith इंडेक्स के डेटा को, इंडिविजुअल डेटा को मैं रिवर्स करता जाऊंगा, है ना। तो वो कैसे करूंगा मैं, अभी इस प्रोग्राम में हमने L1 डॉट अपेंड Li किया हुआ था ना। सो लेट मी टेक दिस प्रोग्राम हियर। What I'm trying to do, previously we have taken the individual word. Now, for the same word, what we are trying to have? Now, for the same word, we will be taking an individual value. अब हम इसको रिवर्स नहीं करना चाहते, हम इंटरनल कंटेंट को करना चाहते हैं रिवर्स। तो हमें लूप में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सपोज मेरे पास एक आई लूप है यहाँ पर, एंड वी विल रन दिस लूप टिल व्हाट सिचुएशन, वी विल बी टेकिंग आई इज इक्वल टू 0 हियर। What I will do, I will run this code till the length of L, till the length of L minus 1. Okay, and so this is the greater than situations, we will be taking this length. Now for this individual data, हमें क्या करना है, इस ith इंडेक्स के डेटा को completely रिवर्स कर देना है। तो हमने जो स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट देखा है, हम उसको लेंगे और उसको रिवर्स कर देंगे। अब इंस्टेड ऑफ दिस I minus 1, what we need to do, that should be the I plus 1. That should be the I plus 1. So let me run this code and taking this Rahul Software Solutions. You see this? The expected output, that was the Lohar and Erat, Foss and Snow. You can see it's a tongue twister actually. So you can see the final output here. So what we have tried, we have started with the single reversal. Now we reached to the sentence case, then we have reached to the individual word of that particular sentence. Now suppose we are having another case here. Suppose we are having one program. You can see this program very well. We are trying to do, write a program to sort the character of the string and first alphabet symbols followed by the न्यूमेरिक वैल्यूज। इसका इसका पूरा गोल क्या है इस प्रोग्राम का, यदि इसमें इनपुट हमारे लिए दिया हुआ है तो इस प्रोग्राम में हमें सारे के सारे अल्फाबेटिक सिंबल्स जो है उनको लेकर आना पड़ेगा बाहर, और सारे न्यूमेरिक सिंबल्स को अलग करना पड़ेगा, एंड वी विल बी शॉर्टिंग। और इस शॉर्टिंग के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा अल्फाबेट है उसके बाद हम हमारा क्या लगाएंगे, न्यूमेरिक वैल्यूज को लगाएंगे। तो अब देखिए, जब मैं अल्फा न्यूमेरिक बात कर रहा हूं, सो कैन यू सी द पिक्चर, द थिंग शुड कम इन योर माइंड कि हमें अल्फा न्यूमेरिक केस का यूज करना है ना। हमारे जो फंक्शंस हमने लर्न करे हैं उनका यूज करना है ना। सो फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर, सपोज मैं इनपुट लेता हूं स्ट्रिंग का, दैट इज एस इनपुट स्ट्रिंग। व्हाट आई नीड टू डू, I have to maintain the two data structures here. Na? For example, suppose I am taking the S1 and S2, two strings, and in the last we will be suppose we will be assigning the same thing in the output. तो हम इसको स्पेस मतलब we are starting with the empty string. What we are trying to do, suppose we are taking the input, we are taking for I in S string. Suppose we are taking this I, we are trying to extract the individual data of this S. इसके बाद हमें क्या करना है, if this I is alpha, we have learned in a previous video, यदि जो I है आपका, जो आपने कैरेक्टर उठाया हुआ है स्ट्रिंग का, वो यदि वो अल्फा है, so what we will do, simply हम एक
स्ट्रिंग का जो S1 लेके चल रहे हैं, सपोज दिस इज फॉर द अल्फा वैल्यू एंड S2 फॉर द न्यूमेरिक वैल्यू. सो व्हाट वी विल डू सिंपली, we will take this and we will do the plus equal to I. If this is not the alpha, what does it mean? For the particular program, we are assuming we are having the input only the alpha value and the numeric values. We are not taking the special symbol keys. तो जो यदि अल्फा नहीं है, इसका मतलब 100% गारंटी है कि वो जो पार्ट है आपका, दैट इज योर न्यूमेरिक. So you can see here, instead of this S1, what I need to do, just simply I will do the S2. So this S2 is S2 plus I. Finally, what I will do, I will take the individual shorted data, that is for the S1, suppose we will take the output plus equal to X. क्योंकि हमने S1 में जितना भी अल्फा न्यूमेरिक डेटा आया है उसको शॉर्ट करके हमने आउटपुट में ऐड कर दिया, क्योंकि हमारी नीड है हम अल्फा डेटा को पहले रख रहे हैं, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिक डेटा को रख रहे हैं. सेम कोड आई एम टेकिंग हियर. Now I'm taking the S2 here. We will check for the output, suppose. Okay, so when we run this code, let I take this. See this, the expected output was the ABD at 134. तो हमने क्या करा सिंपल इस प्रोग्राम में, हमने हमारे जो लर्न फंक्शंस हैं, जो शॉर्टेड है हमारा अल्फा है, हमारा इज न्यूमेरिक जो फंक्शंस हैं, हमने उनको यूटिलाइज करा एंड वी हैव डन दिस. So I hope very much clear to everyone. Now we have one more program here. Suppose we want to develop this program. What is the objective of this program? All of you can see this. We have given the A4, B3 and C2. So what is happening here? हम A की वैल्यू में जो नेक्स्ट 4 हमारा है, 4 minus 1 time the previous character we are trying to repeat. तो जो A था उसको हमने 3 times और A रिपीट करके क्या लिख दिया हमारा 4 times A. Similarly you can see with the B. तो B को हमने फिर 2 times रिपीट करा एंड फाइनली C को हमने 1 time रिपीट करा. So what exact mean of this program? यदि A के बाद 4 लिखा है, it means the output string will contain the 4A. And यदि B के बाद 3 लिखा है तो output string will contain the 3B and 3Cs. So how to deal with this program? Simply, as per the logic of our previous question, suppose I am taking the input from the user. Now I am taking the output here. As per the previous program, all of you are able to understand this, I think so. And what I need to do here, again we have to differentiate about the is alpha and so on. So I'm taking the same loop here. Can you see this? अब जब अल्फा है तो हमें क्या करना है, वी विल बी टेकिंग द आउटपुट एंड आउटपुट प्लस इक्वल टू एक्स, सॉरी आई. व्हाट आई एम डूइंग, मैंने चेक करा यदि भाई जो मैं इंडिविजुअल स्ट्रिंग के कैरेक्टर को एक्सेस कर रहा हूं, इफ दिस इज अ अल्फा वैल्यू नॉट न्यूमेरिक वैल्यू, so take it as it is and just concatenate it with the output. But what we need to do, we are taking one variable that the previous that will maintain our I. मतलब जिस कैरेक्टर को हमने आउटपुट में ऐड करा है उस इंडिविजुअल कैरेक्टर को हम मेंटेन करके भी चलेंगे. अब हम क्या करते हैं, यदि ये अल्फा नहीं है, इट मींस वी हैव टू मूव इन द एल्स सिचुएशन, इट मींस दिस इज द न्यूमेरिक वैल्यू. तो हम किस तरीके से जाएंगे, we will take this only. और एक बात समझने की है, जहां पर
कि यदि मेरे पास अल्फा वैल्यू नहीं है, इसका मतलब न्यूमेरिक वैल्यू है। और न्यूमेरिक वैल्यू कब आएगी इस स्ट्रिंग टेस्ट पैटर्न में? जब मेरा आउटपुट जो है न्यूमेरिक है और which is already containing the previous values. What I will do, the previous is containing the same value. So what I will do, the output plus is equal to previous multiplied by the number of time that occurrence occur. But it is very much important, you have to convert this I into the integer. And how many times it is? Minus one time, because what we have already discussed in the previous discussion, ए के बाद 3 ए चाहिए, तो 4 पे 4 माइनस 1 होगा, इसलिए हम क्या लेंगे यहाँ पर? माइनस 1. Finally, what we need to do, we will be printing output. When you run this code, and suppose I'm taking a A4, B3, C2, can you see this? हमने क्या करा, जो इंटीजर था उसको -1 करके हमने ऐड कर दिया, जो प्रीवियस वैल्यू में हमने वही अल्फा वैल्यू को रख दी, यदि अल्फा वैल्यू, और उसी अल्फा वैल्यू को हमने हमारे आउटपुट में ऐड कर दिया, है ना? सो नाउ दिस प्रोग्राम इज हियर. नाउ देयर आर टू मोर इंपॉर्टेंट फंक्शन एंड वेरी मच हेल्पफुल for this that we need to discuss here right now. One is the CHR and second one is ORD. What is the use of the CHR function and what is the use of this ORD function? Okay, so CHR function, first let me check for the ORD function. It takes your input and returns you the ASCII value. Similarly, the CHR function takes the input and return you the exact character according to the ASCII value. So these are the two important points here, and where these points are important, है ना? So let me check and let me slightly modify our question and we will check, are we able to convert this program into the another test case? So let me take with this program. Okay. So can you see this? It's simple. The same program is there, but instead of 4-time repetition of the A, it is adding the 4 characters. Suppose A, B, C, D, and E. So A plus 4, that should be E. What does it mean? यदि मेरे पास ए की आस्की वैल्यू है, दैट इज द 65 एंड आई एम एडिंग द 5. सो लेट मी चेक फॉर द 69 हियर. When I run this code, can you see this E? That E is available in this program exactly. So when I run this code, similar code is here that we are taking. What I'm doing, I'm taking the input from the user, I'm taking the output. For alpha value, I'm adding the same thing. I'm maintaining the previous character, but what is happening in case of this, for the previous value, what I need to do, here the scenario is completely changed. मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले नंबर तो मुझे मेरे जो आउटपुट है, इस आउटपुट में that will be equal to output प्लस तो प्रीवियस आउटपुट था, उसमें मुझे CHR वैल्यू ऐड करना पड़ेगी. किस कन्वर्जन की? जिसका ORD मेरे प्रीवियस डेटा का है, एज वेल एज इसमें हमें जो इंटीजर वैल्यू आई थी हमारे डेटा की आई की, दैट वी नीड टू ऐड. सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ट्राइंग टू डू, I am taking the previous character, suppose that is A, and I am adding the 4 in. So the value for suppose capital A is the 65 and plus 4, that is the 69. So the 69E will be concatenated to this output. So when I run this code, and I am taking this one, so name output is not defined. So okay, it's good. Can you see this? ये एरर्स भी हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए. नेम आउटपुट इज नॉट डिफाइंड का मतलब है कि हम जो वेरिएबल को हमारे प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं वो वेरिएबल हमारा ऑलरेडी डिफाइंड है ही नहीं, है ना? वी हैव नॉट इनिशियलाइज दैट वेरिएबल और समहाउ. सो आई शुड राइट द आउटपुट हियर. व्हेन आई रन दिस कोड अगेन,
So can you see? Okay, good. Same here. The prev name I have used the word is the previous here. PREB. It's very much important for any प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि हमें उसके सिंटैक्स तो अच्छे तरीके से आना ही चाहिए एज वेल एज उसके हमें यदि हम उनके एरर्स को भी डिबगिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं इट मीन्स यू आर वेरी गुड इन द प्रोग्रामिंग। तो हमें कहीं ना कहीं उन एरर्स को अपने माइंड में सेट करना होता है और जिससे हम उसकी डिबगिंग और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। So for this video, it's over from my side, and in the next video we will be checking for the more programs. Thank you.